Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of discussion is 1.2, that is multimedia, and here are the objectives that we are going to discuss in today's lecture. Show understanding of how data for a bitmap image are encoded. You need to know that how bitmap image is going to be stored in the computer. And the second objective that is very very important, you need to understand the pixel, file header, image resolution, screen resolution, color depth, and bit depth as well. The next objective is perform calculation to estimate file size for a bitmap image. उसके बाद जो next objective आता है that show understanding of effects of changing elements of bitmap image on an image quality and its file size. Use the term image resolution and color depth. So these are the objectives that are related to bitmap image. Okay, so we are going to work on these objective. So सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो ग्राफिक्स होता है या डिजिटल इमेज होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इमेज. कैन यू प्लीज टेल मी डिजिटल इमेज क्या होते हैं? इमेज की कोई सॉफ्ट कॉपी है. या सो सॉफ्ट कॉपी मीन कि इमेज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. तो डिजिटल इमेज वो इमेज या ग्राफिक्स, ठीक है, इसको हम ग्राफिक्स भी कहते हैं, ठीक है, रिमेंबर दैट इमेज और ग्राफिक दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर, कि जिनको हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर सकें या डिजिटल मशीन में स्टोर कर सकें, मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर सकें. वी कॉल देम एज डिजिटल इमेज. ठीक है, whether you're talking about laptop, whether you're talking about a mobile phone. So digital image क्या हुआ हमारे पास? Image or graphics that can be stored in the computer. So we have two different types of digital image. हमारे पास दो टाइप्स के डिजिटल इमेज होते हैं. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटमैप की, बिटमैप एंड वेक्टर graphic. Bitmap and vector graphics are two type of image that we are going to discuss in this topic. ठीक है, तो सबसे पहले हम बिटमैप की बात करेंगे. बिटमैप इमेज आपका वो इमेज होता है whose building block is a pixel. जिसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? पिक्सल. पिक्सल. व्हाट इज ए पिक्सल? जी, व्हाट इज ए पिक्सल? पिक्सल बहुत सारे पिक्सल से एक तस्वीर बनती है ना. या सो यू कैन से, क्योंकि जैसे हमने बात की थी कि पिक्सल क्या होता है हमारे पास, बिल्डिंग ब्लॉक है. बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि इससे मिलकर चीज़ बनी होती है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिटमैप इमेज. पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज ए पिक्सल. सो यू नीड टू टेल देम कि पिक्सल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिटमैप इमेज. ठीक है, बिटमैप इमेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आपका पिक्सल होता है. ओके, सो इसके अलावा आप बता सकते हैं कि दूसरा पॉइंट आपके बारे में क्या होता है इसके बारे में, कि व्हेन यू टॉक अबाउट पिक्सल, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइएबल कंपोनेंट. क्या आता है आपके पास? स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइएबल कंपोनेंट ऑफ व्हाट? किसका आइडेंटिफाइएबल कंपोनेंट होना चाहिए? बिटमैप इमेज. किसका? बिटमैप इमेज का स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइएबल कंपोनेंट. अंडरस्टूड बेटा? जी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या हो सकता है? अगर दिस क्वेश्चन इज अबाउट 3 मार्क्स, तो आप बता सकते हो इट इज डिफाइंड बाय जस्ट 2 प्रॉपर्टीज. पिक्सल is defined by 2 properties. कौन सी 2 प्रॉपर्टी हैं? इट्स पोजीशन, कि वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, पिक्सल कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है जी. इट्स पोजीशन
कहाँ पे पोजीशन होगी? डेफिनेटली बिट मैप इमेज के अंदर, ठीक है। इट्स पोजीशन इन बिट मैप इमेज। एंड सेकंड क्या होता है? इट्स कलर, कि पिक्सल हमारे पास डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सो सेकंड जो प्रॉपर्टीज होगी पिक्सल की, वो होगी इट्स कलर के, वो किस कलर का आपका पिक्सल है। अंडरस्टूड? जी। ओके। सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो बिट मैप है, बिट मैप इमेज हमारे पास आर दोज इमेज दैट आर मेड अप ऑफ पिक्सल्स। अगर हम इनकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इट्स देयर यूज इन डिजिटल कैमराज। कहाँ यूज किए जाते हैं? इन डिजिटल कैमराज के अंदर इनको यूज किया जाता है। सो वी यूज दैम इन डिजिटल कैमराज, या आपके पास स्मार्टफोन्स होते हैं और ऑनलाइन कोई भी वेब कैम है जैसे, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। सो होप सो यू गॉट माई पॉइंट। जी। ओके, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली जो पिक्सल्स होते हैं वो कितने बिट्स ले रहा होता है। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो हमारी सबसे सिंपलेस्ट स्कीम होगी बिट मैप इमेज की, सिंपलेस्ट स्कीम ऑफ बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज सिंपलेस्ट स्कीम क्या होगी? ब्लैक एंड वाइट होगी। क्या होगी? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड वाइट। इससे ज़्यादा सिंपल स्कीम आपकी नहीं हो सकती। आपका इमेज सबसे जो सिंपल स्कीम होगा वो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होगा। एक बिट रिप्रेजेंट करेगी ब्लैक कलर पिक्सल और एक बिट रिप्रेजेंट करेगी वाइट कलर पिक्सल, ठीक है। से आपका पिक्सल 4 बिट ले रहा है। अगर 1 पिक्सल आपके पास है, वो 4 बिट ले रहा है, तो हमें एक ग्रे स्केल इमेज मिलेगा। ग्रे स्केल इमेज क्या होता है हमारे पास? मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रे स्केल इमेज हमारे पास क्या होता है। ग्रे स्केल इमेज आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। दिस लुक लाइक ए ग्रे स्केल इमेज। वाई इट इज ग्रे स्केल इमेज? क्योंकि देखें हमारे पास 4 बिट यूज हो रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग 4 bit मीन 1 पिक्सल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ 4 bit, तो 2 raised to power 4 is equal to 16। इसका मतलब है कि आपका इमेज इज 16 कलर इमेज। तो आपको इस तरीके से ग्रे स्केल डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगा। इफ यू टॉक अबाउट सिंपल दैट इज टेकन 4 बिट्स। अंडरस्टूड? ठीक। ओके। अगर आपको एक इमेज चाहिए, पावरफुल इमेज चाहिए, इफ़ यू वांट टू हैव ए गुड इमेज, और उसका जो कलर भी अच्छे हों, सब बेहतर हो, तो यू नीड टू हैव 8 बिट्स पर पिक्सल। इस मतलब है कि फॉर ए गुड कलर इमेज you need to have a 8 bits per pixel. So 1 pixel should have is equal to 8 bit. 1 pixel should be 8 bit. अगर 8 bit होगा तो इट्स मीन आपके पिक्चर के अंदर 2 raised to power 8 कलर्स आ जाएंगे। दे इज इक्वल टू 256 कलर्स। अंडरस्टूड? जी। सो इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी, अब ये 256 कलर कैसे मिलेंगे आपको? कि डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ हमारे जो बेसिक कलर्स हैं RGB, इनकी इंटेंसिटी होगी। जैसे ब्राइट रेड है, लाइट रेड है, डार्क रेड है, तो डिफरेंट किस्म के आपके पास शेड्स ऑफ कलर्स होंगे, वो RGBs कलर्स होंगे, ठीक है। सो अगर आपका जो पिक्सल, एक पिक्सल अगर 8 बिट स्टोरेज ले रहा है, अंडरस्टूड? जी। ओके। सो for true color require 3 byte per pixel which gives more than 1 million colors। अगर आपको अच्छा कलर इमेज चाहिए तो you need to have a 3 byte। 3 byte का मतलब क्या होता है कि एक पिक्सल अगर 24 बिट ले या 3 बाइट ले,
आपका इमेज जो होता है वो 1 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन कलर से मिलकर बना होता है, और वो आपका इमेज बड़ा रिफाइंड इमेज होता है। अंडरस्टूड? जी। ओके। सो अगर आपको पता करना हो कि आपके जो इमेज है, लेट्स सपोज, एक छोटा सा सिनेरियो में दे देता हूँ आपको, कि लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं कि आपका एक इमेज है दैट नीड टू बी 19 कलर इमेज होना चाहिए। आप एक यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि यू वांट टू हैव एन इमेज ऑफ 19 डिफरेंट कलर्स। So for that purpose, how many bits you need to have per pixel? So we have a formula for that. The formula is 2 raised to power n. So we need to check how, we need to check that what will be the value of n to make the 19 color. Yes, can you please tell me what will be the value of n then? Uh, The value of, 2 is equals to 19 1 by n. so what will be the value of n here? If I require 19 color image, we have a formula 2 raised to power n. So if I say, if I have a n, the value of n 4, so it would be equal to 2 to the power 4 is equal to 16. But I need 19 colors. So for that purpose, I need to have 5, that is equal to 32. So here the value of n will be 5, mean 5 bits per pixel. To have a color of 19 color image, you need to have a 5 bits per pixel. Understood? Okay. Understood or not, beta? जी. Okay. Then moving forward, we have a next terminology. That terminology is known as a color depth. What is color depth? Do you know? Uh, color depth. G. Color depth is a number of bits used to represent one pixel. Yes. Number of Is used to represent one pixel. So to represent one pixel, if we know the number of bits, it means we're talking about color depth. So color depth is a number of bits used to represent one pixel. Let's suppose if we have color depth of 8 bits per pixel, let's suppose if color depth is equal to 8 bit, then 2 raised to power 8 is equal to 256. It means you will be having 256 color image. Understood? It means okay. if we want to increase the number of color, we need to increase the color depth. It means increasing number of color mean क्या मतलब होता है? If you're going to increasing number of color mean you need to increase number of color, you need to increase the color depth. Increase color depth. Understood बच्चे? जी. तो कलर डेप्थ क्या होगा कि कलर डेप्थ बढ़ाने से, इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपका जो इमेज का जो कलर होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल कलर, वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब इंक्रीज करेंगे, कलर डेप्थ को इंक्रीज करेंगे तो आपका इमेज की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। क्वालिटी भी
will improve. आपकी इमेज की क्वालिटी भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कलर डेप्थ. ठीक है, अगर आप कलर डेप्थ को इंक्रीज करते हो तो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी. इमेज साइज विल आल्सो इंक्रीज. आपकी जो इमेज का साइज होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज. अंडरस्टूड. जी. विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग द कलर डेप्थ. क्या डिसएडवांटेज होगा? There will be more details. Yes. So disadvantage. Sharp. Talking about disadvantage. Disadvantage, the size will be large. You need to have a high speed internet to display the image. ठीक है, आपके साइज इमेज का साइज जब बढ़ जाएगा so you need to have a high speed internet to display the image. Understood? जी. Okay. So let's suppose हमारे पास एक क्वेश्चन है. If we see over here, image is scanned with an image resolution. आपको image resolution नज़र आ रहा होगा. And a color depth 8 bits per pixel नज़र आ रही होगी. Calculate the file size in MB byte. So what is image resolution? So सबसे पहले हम इस एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So आपको नज़र आ रहा होगा जो इमेज रेजोल्यूशन है क्वेश्चन के अंदर, what is image resolution in the question is 1024 into 512. So image resolution हमारे पास क्या होगी 1024 into 512 ये पिक्सल की इक्वल होगी. और कलर डेप्थ कितनी होगी? कलर डेप्थ अगर क्वेश्चन के अंदर गौर करें, कलर डेप्थ इज 8 bits per pixel. So I will write 8 bit. What you need to do, you need to calculate the file size in MB. It's mean we are using which prefix? कौन सा prefix यूज हो रहा है? Yes, please. Which prefix we are going to use? Because we are talking about MB byte. MB byte is a binary prefix. Yes. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल पिक्सल फाइंड करने होंगे. What we need to do? We need to find total pixel. जी. जब 1024 into 512 करूँगा, I will get a value. वो वैल्यू होगी 524288 पिक्सल्स होंगे. तो टोटल पिक्सल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे कि हमारे पास कितने हैं 524288. ओके. सो अगर एक पिक्सल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 8 बिट डेप्थ, तो 8 बिट का मतलब क्या हुआ हमारे पास 1 बाइट. ऐसे ही है ना? जी. तो मैं क्या करूंगा टोटल पिक्सल को 1 बाइट से मल्टीप्लाई करूंगा. टोटल पिक्सल को मैंने 1 बाइट से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 524288 बाइट आ जाएंगे मेरे पास. अंडरस्टूड? जी. तो अब मेरे पास ये साइज आ गए. बट आई नीड टू कन्वर्ट इनटू MB बाइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आई नीड टू डू? Divide. Divide by what? Yes. 8. Divide by 8. If I want to convert value byte to MB byte, अच्छा, मेरी से MB byte में जाने के लिए मुझे पहले KB byte में जाना पड़ेगा. KB जी. फिर हम MB byte में जाऊंगा.
What I need to do, please tell me quickly. When I divide by 1024, Divide by 1024, then divide by yes, please. When I divide it by 1024, I will get the answer in kilobyte. Okay, yes. 524 Then to divide by get into megabyte, we will divide by 1024 again. again. So you have to divide twice. आपको दो दफा इसको divide करना पड़ेगा to get the answer in megabyte. So megabyte will be 0.50 megabyte. Understood? Yes. Okay, then we have bit depth. What we have? Bit depth. Again, जो bit depth है and color depth, both terms can be used interchangeably. So when you define bit depth, it is a number of bit. It is what? Number of bit used to store component of that image. Used to store image component. When I want to store image components आपके क्या हो सकते हैं? RGB colors हो सकते हैं. So this is bit depth. So number of bit used to store image component is known as a bit depth. Let's suppose मेरे पास let's suppose if I have a bit depth is equal to 4 and my image is made up of 3 color RGB, so I will write 2 raised to power 4 into 2 raised to power 4 into 2 raised to power 4, that is equal to 16 into 16 into 16. This will be the number of colors. But I told you earlier, when you talk about bit depth and color depth, both terms can be used interchangeably. Let's suppose मेरे पास एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है. This is a question. Photograph has a bit depth of 8 byte and image resolution of 1500 pixels wide and 3000 pixel high. Calculate the file size. तो इसका मतलब है कि you need to find the total pixel first. For that purpose, you need to multiply these two values. You will get the total pixels. Then you have to multiply, because here bit depth is 8 byte. So you will multiply the total number of pixels by 8. You will get the answer in byte. But you have to convert your answer into megabyte. Here it is a denary prefix or decimal prefix. So what you need to do, you need to divide by 1000, again 1000. When you divide it by 1000, your answer will be in kilobyte. And when you want to convert the answer into megabyte, you need to divide it again by 1000 so that your answer should be in megabyte. Understood or not, beta? Yes. Okay. Then we have image resolution. Yes, what is image resolution? Amount of pixels an image is made up of. Yes. Image resolution is number of pixel in bitmap image. Image resolution की बात हो रही है. Image resolution is what? Number of pixel in bitmap image. So we can say, let's suppose if we have this image and this image is a 20
pixel width, and height is a 10. So if you want to find the total number of pixels for that image, this is height. This is height of an image. This is width of an image. So if you want to find the total number of pixels in that particular image, you need to multiply 20 into 10. That would be equal to 200 pixels for that image. So it means that image will be made up of 200 pixels. So this is image resolution. Image resolution is always written product of width product of and height. This will give you what? Total number of pixels. Total number of pixels. Image resolution is always about number of pixels in bitmap image defined by the product of width and height. Understood? Yes. Okay, then we have screen resolution. Yes, do you have an idea about screen resolution? No. Yes. Screen resolution is about product of width and height value of screen. So it's mean आपकी एक स्क्रीन है, जैसे इमेज था सेम ऐसी ही आपकी स्क्रीन है. तो जितने पिक्सल आपकी स्क्रीन विड्थ पे शो कर सकती है और हाइट, so you need to multiply them. So screen resolution is what? About product of width and yes, product of width. जी प्लीज बताएं. And height, product of width and height. Yes. Yes, product of width and height for number of pixel that screen can display. That screen can display. So it means this is the maximum number of pixel on height as well as width that screen can display. If your image is more than these, if your image is more than these pixel, your image will not be displayed on that screen. Okay. Okay. So screen resolution is very, very important, and your image should be less than or equal to screen resolution. If your image is more than screen resolution, yeah, if your image resolution is more than screen resolution, you will not be able to display that image on that particular screen. Understood? Yes. Then we have pixel density. Yes, we have a pixel density. What is pixel density? It is number of pixels per square inch. Number of pixels per square inch is known as a pixel density. So if you increase the pixel density, your image will be more, you can say, clear, your image quality will be more high. But remember that your image size will also increase. Understood? Yes. Okay. So let's suppose there is a scenario. Why bitmap image quality
become poor during zooming. So whenever you're going to zoom an image, your image quality become down. What could be the reason? Remember that bitmap images are organized as grid of colored square pixels. So image is therefore scalable. But when image is scaled, the number of pixels in it does not change. Remember that pixel remains same, but the distance between these pixels will be increased. So this is why the image appear poor quality when you are going to enlarge too much. So this will make the image pixelated. This will make the image look blocked. Understood? Yes. Okay. Then we have how to calculate the file size. Remember that. Let's suppose this is a question where screen resolution is given to you and color depth is given to you. These are the two important values that you need to have whenever you want to calculate the size of bitmap image. So this is image resolution and this is bit depth. To calculate the file size, you need to multiply the image resolution with the color depth or bit depth. So here you will see we have a 24 bits. So image, when you are going to multiply it, you will get the answer in bits. Understood, beta? Yes. So to convert the bits into byte, what you need to divide it by 8. You will get the answer in byte. When you again want to convert them into KB byte, you need to divide it by 1024. You will get the answer in KB byte. But if you want to convert this image size into MB byte, again you need to divide it by 1004. You will get the answer in MB byte. Can you please tell me what will be my next unit if I divide it by 1024? Quickly. Kilobyte. Kilobyte is there beta. Kilobyte तो पहले था. Kilobyte, when I divide kilobyte by 1024 I got MB byte. But again if I want to divide it by 1024, what will be next my next unit? GB byte beta. You forgot the word KMGTP? Hello? Yes. Beta, you forgot KMGTP? Yeah. No. Kilo, mega, giga, tera, peta. Again if I divide Yes. by 1004 I will get terabyte. Again if I want to divide it by 1000 I will get petabyte. Understood? Yes. Okay. Then we have bit file header. Remember that this question has been asked in exam as well. So we will be having a set of byte at the beginning of bitmap file. So this set of byte will help me to identify the file type and information about coding used, that how your file has been encoded. This file header also contain information about color depth or bit depth or image resolution as well. So these information will be the part of a file header. Remember that it will also contain compressions as well as dimension of image as well. That is resolution. Understood? Yes. Then we have a Y bitmap file size is larger than the size of the graphic alone. Remember that we need to have store some kind of data regarding file header as well. Because when we talk about file size, what we do, we need to have an image resolution and what other value we need to have? Image resolution and color depth. Okay, so drawback of using high resolution image. Definitely if you're going to use high resolution image,
your file size will increase. It means Yes. number of pixels that are going to be represent that image will also increase. File size also increase. So डेफिनेटली आपको ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी, आपको फाइल को ट्रांसफ़र करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा. So this is all about bitmap image. Do you have any question regarding bitmap image? No.